लास्ट टाइम, ठीक है, लास्ट टाइम हमने व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट यूज किया था, ठीक है, and we use, just like in the previous example, okay, so we use the null mode of measurement. यहाँ तक हमने लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था स्टूडेंट्स? ये स्लाइड हमने कर ली थी स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, मेथड किया था। अच्छा, तो नल मेथड का एडवांटेज क्या है? किसी को थोड़ा बहुत याद है स्टूडेंट्स? लोडिंग एरर इसमें नहीं है। हाँ, इसमें लोडिंग एरर, इंस्ट्रूमेंट का लोडिंग एरर नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है कि व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द मीटर। तो इसका मतलब है कि सिंस नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द मीटर, देयरफॉर मीटर इज नॉट कंज्यूमिंग एनी पावर फ्रॉम द टेस्ट सिस्टम, एंड देयरफॉर द मीटर doesn't have effect on the it doesn't draw any power, and therefore there is no loading effect of the meter on the measurement. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी से हमारे पास एक और मेथड है विच इज डिफ्लेक्शन। सो लास्ट लेक्चर में हमने नल मोड ऑफ मेजरमेंट किया था, नल मोड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। आज जो है अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफ्लेक्शन मोड ऑफ मेजरमेंट, डिफ्लेक्शन मोड ऑफ मेजरमेंट यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसमें हमारे पास दो सिनारियोज हैं। सिनारियो ए, assuming RM or meter resistance approaches to infinity, and B, assuming RM has some real value. RM doesn't approach to infinity, means it has some real value. रियल वैल्यू का मतलब ये, RM अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब ये, टिपिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दे हैव सम रेजिस्टेंस, सम फाइनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है, 1 मेगा ओम्स हो सकता है, 2 मेगा ओम्स हो सकता है, किलोज ऑफ ओम्स हो सकता है। दैट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। क्योंकि जब आप जब आप एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से कोई चीज मेजर कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट in the case of voltmeter or ammeter, the electric energy need to pass through the meter, and that electrical current or electrical energy will have some resistance while passing through the meter, and that resistance is called meter resistance. Now typically real life meters will have finite resistance. Finite resistance means it will have a value maybe in kilo ohms or mega ohms. Or if it's an ammeter, then very small value, but still it will have some finite value. On the other hand, assuming that the meter has infinite resistance, that is of course is an assumption, a simplification. There is a reason why we do this simplification. It makes our calculation easy, but if we make this assumption, then there would be some error in our calculation. And when we make the assumption that RM is approaching infinity, that means we are ignoring the effect of we are ignoring the loading error of the instrument on our measurement. Okay, so real life scenario will be this one. Okay, when RM has some finite value, but
a simpler calculation formula. We can derive a simple calculation formula if we assume that Rm approaches to infinity. ठीक है? यहाँ तक clear है students? Students? Yes, sir. ठीक है? अब, so let's start our assumption with a simple, we will first do simple analysis, which is we assume that Rm approaches to infinity. If Rm approaches to infinity, like here in this case, Rm approaches to infinity, then what would this mean? What would this mean? If the resistance is infinite, then would there be any current? No current. If the resistance is infinite, then of course there will be no current flow through the meter. So if there is no current flow through the meter, I can do that. Let's start a new slide and use a. Okay. So okay. So positive side is A, R1 and R3. So this is A, this is R1, R3, R2, R4. Okay, and I believe these are D, and this one is between R1 and R2 is B and C. Okay, so this is B and this is C. And here between B and C is Rm. Okay. If Rm approaches to infinity, then that means that there can be no flow of current from either B to C or from C to B. Or in other words, to be more precise, we say that IM, current through the meter, will approach to 0. ठीक है? यहाँ तक clear है, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, if we assume that initially, let's say initially the bridge is balanced. If the bridge is balanced, we have, so let's say a simple condition for bridge balance. We know the simple condition, we know the condition for bridge balance is R2 divided by R1 is equal to, for this circuit or this nomenclature of the bridge circuit, R4 divided by R3. ठीक है, जो naming convention हमने use किया for this. So a simple bridge balance condition exists if we say that R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4. ठीक है, some value, maybe 100 ohm, 200 ohm, whatever. If all the resistance values are the same before we conduct any experiment, then that means that initially the bridge is balanced. Which, what does that means? That the voltage VBC is equal to 0. That means that there is no voltage difference between, there is no potential difference between point B and C. Because the bridge is balanced, there is no potential difference between point B and C. Therefore, there is no current flow from point B and C. Therefore, there is no deflection of the meter needle, and therefore we say that the bridge is balanced. And this is before we start conducting our experiment. So let's suppose our experiment is that we have some furnace, okay, a furnace, and we want to measure the temperature inside the furnace. So we can use a type of a instrument or sensor called an RTD,
RTD, resistance temperature detector. Okay. Now this RTD is has a very simple working principle. It's a resistance, and the resistance value, resistance value of RTD is directly proportional to, or is proportional to, temperature. So when the temperature increases, the resistance value increases. When the temperature drops, the resistance value of RTD sensors also drops. And so we know that by measuring the change of resistance of the RTD, we can find out the change of temperature. Okay? यहाँ तक clear है, student? Yes, sir. Okay, so what I'll do, how do we use the Wheatstone bridge? So I'll remove R1 resistance from the circuit and connect RTD instead of R1. So now my R1 is equal to RTD. Okay. Now assume that initially for certain temperature, whatever that temperature is, maybe it's room temperature, assume that this resistance is equal to, let's suppose, 100 ohm. Okay. We are saying that at temperature is equal to 25 degrees C, resistance of RTD is equal to 100 ohm. Take it, just some random value. We don't know what actual value of the RTD typically is. At this point, we are not interested in that. Just assume it's an RTD whose resistance value is 100 ohm when the room temperature, when the RTD is placed inside the room at a temperature of 25 degrees C. Okay. So initially, let's say we apply 15 volt DC voltage or potential difference to this Wheatstone bridge. And since R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4 is equal to 100 ohm, therefore, as per this formula, this bridge circuit is in balanced condition, and therefore there doesn't exist any potential difference between point B and C. Since there doesn't exist any potential difference between point B and C, therefore, in the beginning, I meter or IG, whatever, galvanometer, okay, IG is equal to 0 initially, and there is no deflection of the meter, and the bridge is balanced. Now let's suppose we turn on our furnace, and the room and the temperature inside the furnace changes from 100 degrees C to, let's suppose, 250 degrees C. Okay, and let's suppose this corresponds to from 25 degrees C to 250 degrees C, from 25 degrees C to 250 degrees C. Now this corresponds to, when the temperature is 250 degrees C, this corresponds to RTD. Let's suppose it corresponds to 100 let's say it corresponds to I've used very high values for the RTD. It shouldn't be that much, but anyway, let's go with our experiments. It corresponds to 102.5 ohm. Okay. Now since this condition, when R1 is equal to RTD is equal to 102.5, when these values R1, when the new value of R1 is plugged into the Wheatstone bridge equation, which contains the previous value, which also contains the constant value of R2 is equal to R3 is equal to R4 equal to 100 ohm. Now this equation is no longer satisfied, and the bridge circuit is not balance, which means that there is a potential difference, which we say VBC exists, and that potential difference depends on
that potential difference depends on the potential difference of potential drop VR1, difference of potential drop minus VR3. Okay? So depending on how much is the difference of potential drop, so this is potential drop across R1 or RTD, and this is potential drop between point A and C, which is VR3. Okay? So depending on the potential, if the potential drop across R1 and R3 is same, then in that case, and of course the potential drop between R4 and R2 is also same, then the bridge is balanced. But if the potential drop between across R3 is different than the potential drop across R1, then there will be potential difference between point B and C. Now, potential difference across R1 is equal to I1 R1, and potential drop across R3 is equal to I3 R3. So any circuit current going from point A to B, we call it any current, I1, and the current flowing through R3, we call it I3. So we can say that the input current I is equal to I1 plus I3. So I just like Kirchhoff current law, KCL, if we do nodal analysis, then for any node, the sum of input currents and output currents is equal to 0. Okay? Uski basis pe. Now, if we have this condition, okay, so from this condition, we can then use I1 and I3 values. We can replace I1 and I3. So this VBC will be the, VBC is basically output voltage detected by the voltmeter. Okay? Now, to measure I1 and I3, we have to understand few basics, or we have to revisit basic electric networks. Now, if we assume that Rm approaches to infinity, that means that this is an infinite resistance path. So this path is as good as nothing between point B and C. Okay? That means it is, you can assume it to be an open circuit because the resistance between point B and C is infinite resistance. So we can assume it to be an open circuit. If it is open circuit, then if the input current I is split into two currents, I3 and I1, then for the first branch, A to D, ABD, the resistance across R1 and R2 will be the same I1. And the resistance across R3 and R4 will be I3. Questions so far, students? Students? सर ये हमने चेंज करने के लिए आरटीडी को इंट्रोड्यूस किया ना, तो ये सर मतलब इसके अलावा कोई हम नहीं कर सकते, जस्ट हमें रेजिस्टेंस ही तो चेंज करनी है. हाँ, रेजिस्टेंस ही चेंज करना है. आप कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी अननोन रेजिस्टेंस ले लें, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट. ठीक है? सो टिपिकली इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस. ठीक है? ऑफ कोर्स इट कैन वर्क फॉर बिग चेंज इन रेजिस्टेंस, लेकिन उस केस में आपके पास बहुत हाई डिफ्लेक्शन आएगी. ठीक है? बट आंसर टू योर क्वेश्चन, यस, यू कैन यूज anything, you can use a potentiometer, which is a variable resistance. You can use an RTD. You can use some other resistance to any unknown resistance that you want to measure. Right. ठीक है? अच्छा, अब यहां तक आप लोगों को क्लियर है कि नोड ए पे I input current is divided into I1 and I3 currents.
Any questions so far, students? यहाँ तक. क्लियर है सर। अच्छा अच्छा, सर इस ये बात जी जी पूछे. सर ये हम कहते हैं आर एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो सर इसका मतलब हुआ कि आर एम के अक्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप भी इन्फिनिटी होगा। मतलब इन प्रैक्टिकल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जितना भी सर हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं वो आर एम की अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो सर इसका लोडिंग इफेक्ट नहीं नहीं इंडक्शन नहीं में नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, आरएम के अक्रॉस ड्रॉप नहीं हो रहा. आरएन के क्रॉस ड्रॉप नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि देखें ड्रॉप किस चीज के बराबर है. वी एम इज इक्वल टू आई एम आर एम, ठीक है. व्हेन आई एम अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, तो क्या बनेगा? सर वो तो ठीक है, लेकिन सर ये नहीं आर नहीं नहीं, वो हाँ, तो जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी से क्या चीज बनता है? सर डोंट नो सर। वी डोंट नो, ठीक है. But how we treat it? We treat it what we say how do we treat it? We say that the voltage drop across the resistance, ठीक है, voltage drop across the resistance will be equal to, how do we treat it? We treat, rather than treating it like this, we treat it that this is open circuit. We treat it to be an open circuit. देखिए चले, let's imagine it like this. दो कंडक्टर है वापडा के, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है, या एक न्यूट्रल है और एक हॉट वायर है. दोनों को आप हवा में पकड़ लेते हैं, ठीक है, हवा में. Why doesn't any current flow from hot wire to the neutral wire? स्टूडेंट जिन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा था इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को. सर अगर कोई कनेक्शन ही नहीं है तो किस तरह फ्लो करेगा? कनेक्शन ना होने का क्या मतलब है? कांटेक्ट नहीं है सर। कांटेक्ट ना होने का मतलब क्या है? सर इसके दरमियान में कोई लोड नहीं है। इसका मतलब यह है कि इनके दरमियान जो रेजिस्टेंस है पाथ का, हवा तो मौजूद है ना, हाँ ठीक है, वो क्या है? जी जी रिफतुल्लाह. हाँ, इनके दरमियान जो पाथ का रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है. देयरफॉर देयर विल बी नो करंट फ्लो बिटवीन द न्यूट्रल एंड द हॉट वायर, ठीक है. लेकिन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल ड्रॉप की हम बात नहीं कर रहे, दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? स्टूडेंट 220 वोल्ट्स। 220 वोल्ट. अगर वापडा की बिजली है तो नॉमिनल 220 वोल्ट बिजली है तो वो 220 वोल्ट होगी, ठीक है. अब देखें, जैसे जितना कंडक्टर होता है ना, देखें कंडक्टर और इंसुलेटर में फर्क किस चीज का होता है? किसी को पता है स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स. सर जो कंडक्टर होता है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत लो होती है। हाँ, relative, these are conductor and insulator are relative concepts. कंडक्टर में आपके पास वैल्यू जो होगी वो स्मॉल होगी और इंसुलेटर में जो है वो ज्यादा होगी. जितनी ज्यादा इंसुलेटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही वो अच्छा इंसुलेटर होगा, बैड कंडक्टर होगा. जितने कंडक्टर की इंसुलेटर की वैल्यू कम होगी उतना वो अच्छा कंडक्टर होगा और बैड इंसुलेटर होगा. अब आइडियल इंसुलेटर क्या चीज होगी स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। विच इज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. और आइडियल कंडक्टर जिसे सुपर कंडक्टर कहते हैं, उसमें जिसका रेजिस्टेंस जीरो होगा, ठीक है. अब इसी चीज को दोबारा देखें, मैं ये कह रहा हूं कि वन आर एम अप्रोचेस टू इंफिनिटी, वन आर एम अप्रोचेस टू इंफिनिटी, सो वी कैन treat this circuit
by ignoring this current path. We say that this current path doesn't exist. Okay? Yes, sir. If this current path doesn't exist, then the voltage difference between point B and C will be equal to the, जैसा अभी मैंने आपको कहा था कि अगर आप एक हॉट वायर और एक न्यूट्रल वायर को हवा में पकड़ लें, एक दूसरे के साथ टच ना करें, तो दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? विच विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अगर आप आपस में कनेक्ट नहीं करते. ठीक है स्टूडेंट्स? वो आप बोलेगा सर 220 होगा सर. वो 220 होगा ना. अब यहां पर वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा? वो डिपेंड करेगा कि ना कनेक्ट करने से पहले पॉइंट बी और पॉइंट सी पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है. ठीक है, इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दिया था कि थिंक ऑफ पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ हाइट डिस्कस करते हैं. ठीक है, लेट्स सपोज इफ इट इज 15 वोल्ट के बजाय हम ये एज्यूम करते हैं कि 15 वोल्ट का मतलब है कि हाइट डिफरेंस ऑफ 15 फीट. तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है 15 फीट पे है और ये पॉइंट जो है 0 फीट पे. ठीक है, जब आप पॉइंट ए पे आते हैं, ठीक है, और if there is a potential drop from point A to C, तो let's suppose there is a potential drop of 4 feet. तो अगर A 15 पे है, 4 feet drop हो जाता है, तो C पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर, पोटेंशियल की वैल्यू, that will be 15 minus 4 will be 11 feet. ठीक है, इसी तरह A और B के दरमियान अगर पोटेंशियल ड्रॉप 3 feet होगा, ठीक है, और A पे पोटेंशियल जो है 15 feet है, और तो बी पे पोटेंशियल ड्रॉ 15 माइनस 3 क्या रह जाएगा? 12 फीट होगा. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, तो आप क्या कहेंगे? 1 यूनिट या 1 फीट. ठीक है, नाउ थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स. ठीक है, think of it in terms of electric potential rather than feet. Think of them as electric potential, but the concept is exactly the same. ठीक है, potential की means higher potential energy for the electric current. मतलब है if you have a point which is at higher electrical potential and another point which is at lower electrical potential, then there will be current flow from higher electrical potential to lower electrical potential, and the difference of the potential between these 2 points is called voltage or potential difference. ठीक है? Yes, sir. अच्छा, now if we, अच्छा यहां तक अगर क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था आपसे कि if we assume that there is no path from point, so if we assume that there is no path from point B to C, and there is just a resistance R1 is equal to RTD. If we have this resistance and this is our I1 and this one is I3. ठीक है, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि is it safe to say that the same current I1 that passes through R1 will also pass through R2, and the same current that passes through I3 will also pass through R4? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि अगर दरमियान में यहां पर करंट पाथ होता आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, उस केस में फिर हम ये एजम्पशन नहीं ले सकते, फिर हमें क्या करना पड़ता? हमें या केवीएल या केसीएल यूज करते. ठीक है, चूंकि हमने दरमियान के पाथ को इग्नोर कर दिया, since the resistance of this path is infinite, approach to infinity, that means that it is not conductor, there is no conductor present. Hypothetically speaking, there is no conduction between point B and C, so there is no current flow between point B and C, so we can ignore this path of current flow. If we ignore this path of current flow, our circuit becomes simple and we do not need to use
KVL or KCL or Norton or any other complex network analysis, we can simply, because this whole thing makes our circuit very simple, and we can simply find out. Okay, so this circuit becomes something like this: R3 plus R4 R1 plus R2. This is our I current, and this one is I3, and this one is I1. ठीक है, सिमिलरली हम पैरेलल का फार्मूला अप्लाई कर लें. ठीक है, तो हमारे पास पैरेलल का फार्मूला आ जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास सिंपल हम इस सर्किट को कन्वर्ट कर सकते हैं आर टोटल. सो हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी. अगर हमें वोल्टेज पता हो, आर टोटल की वैल्यू मालूम हो, तो हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी. हमारे पास अगर आई की वैल्यू नोन हो, हमें रेजिस्टेंसेस का पता हो, सो हमारे पास फ्रॉम दिस इक्वेशन, if we find value of I1 and I3 and plug it back into this equation, ठीक है, अगर हम I1 और I3 की वैल्यूज अभी जो मैंने दूसरी स्लाइड पे आपके सामने सर्किट बनाए, उस एनालिसिस से अगर हम I1 और I3 की वैल्यू निकाल लें एंड देन प्लग इट इनटू दिस इक्वेशन, ठीक है, if we plug it into this equation, we get this equation. क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? Yes, sir. ठीक है, once we have this equation, अब now you can use this equation for the measurement of unknown resistance. So let's suppose if initially R2 divided by R1 is equal to R3 divided by R4 divided by R3. Initially, if all the resistances were same, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो example ली थी कि R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4. If all the resistances are same, that means this condition is satisfied. This means that this bridge is a balanced bridge. So the output voltage, the deflection, EO is the output voltage. And so the voltage shown by the meter will be 0. And you can see it here. यहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक है. So for example, in our case, if this is 100, 100, 100, 100, 100 plus 100. ठीक है. In this case, inside the bracket, we have 100 divided by 200 minus 100 divided by 200, and that comes out to be 0. Multiply input voltage, 0 multiply input voltage, the output voltage will be 0. But when the RTD, R1 resistance changes from 100 ohm to, let's suppose, 102 point, to some unknown value, So let's suppose R1 is our RTD resistance, and we have turned on the furnace, and the furnace temperature has changed from room temperature to some unknown value, and we want to know this resistance of this RTD. So since all the other resistances values do not change, only R1 changes, the input voltage will be known. Let's suppose it's 15 volt, and we will use a voltmeter to measure the output voltage of the V-stone bridge. Once we know this value, then the only unknown in this equation is R1, and we can solve this equation for R1. यहाँ तक clear है, students? Yes, sir, clear.
ठीक है. Now we can do a slight more mathematical manipulation. We can assume in this previous ये वाली equation, simple equation, we can take this simple equation where output of the Wheatstone bridge E naught is equal to input to the Wheatstone bridge EI into R1 divided by R1 plus R2 minus R3 divided by R3 plus R4. ठीक है. This is our Wheatstone bridge equation deflection mode measurement के लिए when we assume that Rm resistance approaches to infinity, that the meter resistance approaches to infinity. कोई भी आप actual life में, real life में अगर कोई भी आप वोल्ट मीटर लेंगे, then it resistance doesn't approach to infinity. ठीक है. कोई भी real life वोल्ट मीटर होगा उसमें Rm will be some finite value. ठीक है. कुछ finite value होगी, infinite value नहीं होगी. लेकिन जब हम ये real life scenario consider करते हैं, then our equation becomes a bit complicated. Therefore, we start with a simple calculation by assuming simple equation by assuming Rm approaches to infinity, and we get this equation. So this is the equation when we assume Rm approaches to infinity. Now, we can treat this problem in a slightly different way. We assume if we are only interested in the change in resistance rather than the we are interested in the difference of resistance, ठीक है, rather than the final value of the resistor. So initially R1 has some value, let's suppose 100 ohm, and let's suppose its final value or the unknown value is 102.5 ohm. Now delta R will be equal to 2.5 ohm. So final value, we can say final value to be R prime. So final value R prime, R1 prime is equal to initial value R1 plus change in delta R1. Clear hai yahan tak, students? So if we treat this problem in this manner, that we use final value for resistance R1 equal to R1 prime, which is equal to initial value, which is R1 plus delta R, which is the change in resistance. If we take this value, we replace, so for initial values, for when R1, okay, for initial value, we have, this equation, okay? But if R1 changes to R1 prime such that, which is R1 prime kya cheez hai? Final value, such that R1 prime is equal to R1 plus delta R1, then the output voltage will change, will change from E naught to E naught prime, where E naught prime, final value of the output voltage is equal to initial value of the output voltage plus change in output voltage. Assuming that the bridge is initially balanced, then initial output voltage value will be equal to 0, and our final output voltage value will be equal to change in output voltage. Clear hai yahan tak, students? सर ये तो फिर जब चेंज इन आउटपुट वोल्टेज करेंगे तो वो तो हमारे पास जस्ट वही आ जाएगी, उसी की वैल्यू, फाइनल वैल्यू, क्योंकि वो जीरो से हम वही फाइनल वैल्यू होगी. दैट्स द पॉइंट. ठीक है. सो इफ यू स्टार्ट, देखिए, if you start with a balanced bridge, so you do not need to know the initial output voltage because initial output voltage is 0. ठीक है. And the final output voltage value will be the change of voltage from 0 to some final value. Okay? And in that case, our formula comes out to be
this. So it's a simpler form. It's a simpler form of this equation. Okay? If only one resistance varies, and all the other resistances are constant, and we want to, and the output voltage. So typically, based on this formula, you can see that the output voltage is a function of input voltage, and so output voltage is a function of input voltage and resistances R1, R2, R3 and R4. Okay? But if we assume that R2, R3 and R4 value do not change, that they are fixed resistances, R2, R3 and R4 are fixed resistances, only R1 value changes. In that case, output voltage, and let's suppose input voltage is also not varying, then in that case, E naught, okay, is a function of only R1. Yes, sir. ठीक है. In all, यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या है? You can use this equation. Sorry, where is that equation? You can either use this equation or you can use this equation. Okay? We use this equation only when one of the resistance, typically R1, changes and all the other resistances are constant. But if more than one resistance changes or some resistance other than R1 is changing, okay, then you should use this formula. Okay. यहाँ तक clear, students? Yes, sir. Acha. Now, let's define bridges on the basis of how many of the total resistances are variable resistances or are changing while the other resistances are constant. So if one of the resistance is changing and all the other resistances are constant, then this type of bridge is called quarter bridge. If any two of the resistances are changing and the other two resistances are constant, any two, okay? So it can be either these two that I've encircled or these two that I've encircled, okay? So if any of the two resistance out of the four resistances are changing and the other two are constant, this type of a bridge circuit is called half bridge. Okay. Now, there is a third type of bridge based on how many resistances are changing, which is called a full bridge. Koi bata sakta hai what is a full bridge? V-stone bridge circuit? इसमें सारे चेंज हो सकते हैं. सारे change हो सकते हैं. ठीक है? So all R1, R2, R3, and R4 are variable. They are all changing. This type of bridge will be called a full bridge. So a quarter bridge, one of the four four resistances, one of the four resistance value changes. Half bridge, two of the four resistance value changes. Full bridge, four of the four resistance value changes. Okay? So if you have a quarter bridge, okay, you can use this formula. Okay? So if R1 is changing, okay, anyway, so Sir, sorry sir, which one formula sir? वो कलर sir difference नहीं समझ आ रही. okay. If you have a quarter bridge where all the resistances were initially equal, okay, and only R1 value changes, then you can use this formula. Right sir. Okay. If you have any other condition, you can use this formula for a quarter bridge circuit as well.
or for any of the other bridge configuration, half bridge or full bridge configuration, you can use this formula. Okay? And this formula is applicable to any of the bridge configuration, whether quarter bridge, half bridge, or full bridge circuit. Clear यहाँ तक? यस सर। तो फिर क्वार्टर के लिए उसी फार्मूले की क्या जरूरत है? That is a simpler, easier, shorter version of the formula. अच्छा, ठीक है? टिपिकली जब हम क्विक कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली ये फार्मूला यूज करते हैं. yes, sir. ठीक है? डेल्टा आर बाय आर ओवर 4 प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर. दैट इज द सिंपल फार्मूला. अच्छा, इन द नेक्स्ट जी क्वेश्चन. सर जब ये R1 की वैल्यू चेंज होती है तो सर ये हम EM किस तरह मेजर करते हैं सर, जबकि उसकी रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट है. हाँ, उसकी रेजिस्टेंस हम इनफाइनाइट, ठीक है, हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, लेकिन हम इज्यूम करें कि वोल्ट मीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, जबकि रियलिटी में तो फ्लो हो रहा है. तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास इस इक्वेशन से जो वैल्यू आएगी चेंज इन रेजिस्टेंस की, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी. समझ आ रही है इस बात की? सर जब करंट फ्लो ही नहीं करता तो सर वो वोल्टेज ड्रॉप कैसे मेजर कर रहे हैं सर? नहीं, कैलकुलेशन आपने किस चीज के लिए किए हैं मुझे ये बताएं. कैलकुलेशन आपने किस चीज के लिए किए? सर हमने R1 के लिए कर रहे हैं. R1 के लिए तो कर लें, लेकिन कौन सी कंडीशन के लिए कर रहे हैं? वी एज्यूम दैट द RM अप्रोचेस टू इंफिनिटी. यस सर, एग्जैक्टली. ठीक है? एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज नो करंट फ्लो बिटवीन पॉइंट बी एंड सी. हमने ये एजम्पशन की है ना. यस सर. लेकिन there doesn't exist any meter in the world as far as I know whose resistance approaches to infinity or whose resistance value is infinity. It will approach to infinity, means it will have some higher value, many mega ohms, ठीक है, but not exactly infinity. So इसका मतलब यह है कि there will be some small current flow through the meter. If there is small current flow through the meter, तो ये जो मेरी इक्वेशंस थी कि I1 current flow through R1 will be equal to current flow through R2 and current flow through R3 is equal to current flow through R4. ये जो मेरी assumption है, this will no longer be valid. ठीक है? अब अगर मीटर की वैल्यू क्लोज टू, यानी इंफिनिटी के जितने ज्यादा करीब होगी उतनी मेरी assumption, ये इक्वेशन ज्यादा वैलिड होगी. जितनी मीटर की वैल्यू इंफिनिटी से दूर होगी उतनी मेरी जो assumption है वो लेस वैलिड होंगी. एंड रिजल्ट क्या होगा? अगर मैं ये वाला फार्मूला यूज करता हूं, अगर मैं ये वाला फार्मूला आपके सामने जो मैंने डिराइव किया, ठीक है, इफ आई यूज दिस फार्मूला, ठीक है, and I use a meter, let's suppose a meter whose RM is equal to 1 giga ohm, ठीक है, then let's suppose from these calculation I find out that R1 delta R1 is equal to, let's do this like this, let's do a thought experiment. Imagine कि R1 value changes from 1 ohm to R1 prime, which is equal to 1.1 ohm. ठीक है? अब सबसे पहले मैं एक मीटर यूज करता हूं, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस जो है मिसाल के तौर पे 1 गीगा ओम है. एंड आई डू ऑल ऑफ माय कैलकुलेशन और मेरे पास रिजल्ट ये आ रहा है कि R1 prime value is 1.11 ohm. ठीक है? अब मेरी कैलकुलेशन से जो वैल्यू आ रही है और जो एक्चुअल चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू है, उन दोनों में फर्क है या नहीं है? यस सर, फर्क है. ये फर्क क्यों आ रहा है?
सर कुछ ना कुछ करंट जो है वो आरएम की तरफ फ्लो कर रही है सर। आरएम में कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि मैंने अपनी कैलकुलेशन, अपनी इक्वेशन एक एजम्पशन पे डिराइव की थी, और वो एजम्पशन ये था कि देयर इज प्रैक्टिकली जीरो करंट। ठीक है, क्योंकि वो मेरी एजम्पशन 100% सेटिस्फाइड नहीं है, तो मेरी कैलकुलेशन से जो रिजल्ट वैल्यू आ रही है, आंसर आ रहा है, और जो कि रियलिटी में आंसर है, उन दोनों में फर्क है। ठीक है, अब ये फर्क कम होगा अगर आरएम की वैल्यू ज्यादा होगी। लेट्स सपोज आरएम की वैल्यू 1 गीगा ओम के बजाय वो है 1 मेगा ओम। ठीक है ना, 1 मेगा ओम तो इंफिनिटी से ज्यादा दूर है ना हमारे इजम्पशन से। अब जो मेरे पास एरर आएगा, हो सकता है वो 0.05 यानी 1.15। अब मेरे पास कैलकुलेशन से हो सकता है ये वैल्यू आ जाए, जबकि रियलिटी में एक्चुअल चेंज इन रेजिस्टेंस जो है, वो एक्चुअल रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू 1.1 ओम है, और मैंने जो 1 मेगा ओम इंस्ट्रूमेंट से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट की है, वो जो है मेरे पास 1.15 आ रही है। तो अगर आप देखें 1 गीगा ओम पे एक्चुअल और थ्योरेटिकल रिजल्ट के दरमियान एरर स्मॉल है, और as the value of the meter resistance deviate from our assumption, जितने उससे ज्यादा deviate होगी, and our assumption is that the meter resistance approaches to infinity, उतने ही हमारी कैलकुलेशन में एरर ज्यादा होगा। अब समझ आ रही है कॉन्सेप्ट की स्टूडेंट? सर वो बात तो क्लियर है सर। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि सर हम एक सेकंड के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो ये वोल्ट मीटर है, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। सर जब इनफाइनाइट है तो करंट फ्लो ही नहीं करेगी, तो सर हमें वो वोल्टेज ड्रॉप कैसे मेजर करके देगा सर? ये तो जरा देखें ये क्या चीज है, जरा गौर से देखें इसे। इक्वालिटी का साइन है यहाँ पे? नो सर, अप्रोचेस का साइन है। अप्रोचेस के साइन, तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर वो भी अप्रोच करेगी जीरो को सर। जीरो तो होगी नहीं ना, नो सर, जीरो नहीं होगी। अप्रोच टू जीरो की। अब आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया यहाँ पे। That means that there is some current flow through the meter, but that current flow through the meter is infinitely small and it is negligible for all intent and purposes. यस सर। ठीक है? So Yes. it is such a small current that we can assume that there is practically no current flow. That's how we deal with this scenario. ठीक है? It's such a small current that the effect, that the loading error of this current on our calculation is negligibly small. यस सर, थैंक यू सर। और जितना मीटर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उतना ही करंट की वैल्यू कम होगी, उतना ही हमारी प्रैक्टिकल मेजरमेंट और हमारी थ्योरेटिकल मेजरमेंट वो उनका रिजल्ट सेम होगा। जितना मीटर रेजिस्टेंस कम होगा यानी इंफिनिटी से दूर जाएगा, उतना ही करंट फ्लो थ्रू द मीटर बढ़ेगा। और उसी, चूंकि हमारी assumption तो ये है कि करंट फ्लो थ्रू द मीटर इज इनफाइनाइटली स्मॉल। इफ इट इज नॉट इनफाइनाइटली स्मॉल, तो जो मेरी इक्वेशन से वैल्यू आएगी चेंज इन रेजिस्टेंस की, और एक्चुअल चेंज इन रेजिस्टेंस में उसकी से दूर जाएगा। समझ आ रही इस बात की? यस सर। ठीक है, Yes, अच्छा। sir. अब जी, अब कुछ स्टूडेंट, जैसे अभी एक स्टूडेंट है, वो सेटिस्फाइड नहीं है कि भाई सर ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि करंट अप्रोचेस टू जीरो है और मीटर रेजिस्टेंस अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सर कि नहीं, मीटर की टिपिकल रेजिस्टेंस is of course it is never equal to infinity,
So it typically meters have some finite value of resistance. So अब हम कहते हैं कि नहीं, we don't want to treat our system with the assumption that RM approaches to infinity. We want to treat our circuit as it is. और हमारा circuit क्या है कि RM doesn't approaches to infinity. Of course, RM value is high नहीं आ रही। here. सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। सर आपकी वॉइस लैग कर रही है, नहीं समझ आ रही सर। अभी आवाज आ रही है आपको स्टूडेंट्स? तो सर अभी ठीक हो गई। ठीक है, चलो मैं दोबारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। So let me present. ठीक है, so now just like RM approaches to infinity as a real life problem where RM doesn't approach to infinity, rather RM value is some finite value. ठीक है, in this case we cannot say, in this scenario we cannot say that this is open circuit. ठीक है, we cannot say that. So therefore there must be some current flow from through R1, there must be some current flow through R2, there must be some current flow through RM, and the direction of current flow through Rm depends on the potential difference between point B and C. If the potential at point B, electrical potential at point B is greater than electrical potential at point C, then there will be current flow from point B to C. And conversely, if the potential at point C is less than electrical potential at point B, then the current flow will be in this direction. Okay? If our circuit is like this and we cannot remove or we cannot assume RM approaches to infinity, then we will have to solve this problem. We cannot solve this electrical circuit as a simple series parallel combination of resistances. Instead, we'll have to solve it using electrical method for electric network analysis. Most probably, you can do it with the help of a KVL, KCL, either using KVL or KCL or combination of them. So if you use those equations, your final equation will come out to be something like this. Okay? And the difference between this and this equation, the other equation, so you can multiply where Ig is the current flow through the meter resistance. So you can multiply this with Rm on both sides, and Ig, or you can use Rg rather than R. So I'm interchangingly, I'm using Rg and Rm interchangeably. Both of them, you can, Rg is galvanometer resistance and Rm is meter resistance. They are the same. So this will become Vg, which is equal to output of the Wheatstone bridge. So output of the Wheatstone bridge, or delta E naught, change in output of the Wheatstone bridge, is equal to Vg, or delta Vg, assuming initially the bridge is balanced,
delta VG, which is the voltage drop across the meter, which is equal to RG, meter resistance, into IG, which is the current flow through the meter. And this is the equation. So the difference between 6.22 equation and this equation, E naught is equal to EI into R1 divided by R1 plus R2 minus R3 divided by R3 plus R4. इन दोनों इक्वेशंस में फर्क क्या है? Why are these two equations different, students? कौन बताएंगे? RG मल्टीप्लाई हो गया है। नहीं, बेसिक assumption क्या है? इस इक्वेशन को हमने डिराइव किया है when we take Rm approaches to infinity. और ये वाली इक्वेशन हम डिराइव करते हैं when Rm doesn't approach to infinity, rather it is a finite value. ठीक है? सिर्फ ये assumption यूज करने से हमारी इक्वेशन सिंपल हो जाती है। अगर हम ये assumption यूज नहीं करते, हम assume नहीं करते, सिंप्लीफिकेशन नहीं करते, हम रियल लाइफ प्रॉब्लम के तौर पे इसे डील करते हैं, तो हमारे पास एक्चुअल इक्वेशन ये वाली आई। अब क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। Do you have any question? सर एक क्वेश्चन है कि सर पहले हम नल मोड में इस तरह करते हैं कि जब डिफ्लेक्शन मतलब कि रिफ्लेक्ट नीडल 0.5 तो हम उस वक्त रीडिंग लेते थे। यहाँ पे हमें किस तरह पता चलेगा कि ब्रिज जो है ना, मतलब कि R1 की कितना को हम कितना चेंज करेंगे तभी वो बैलेंस होगा सर? फिर सर इक्वेशन से नहीं, पहले थोड़ा एक बात को समझ लें। देखिए पूरा प्रोसेस कैसे होगा मैं आपके सामने करता हूँ, ठीक है? डिफ्लेक्शन मोड और दोनों, ताकि ये कंफ्यूजन आपकी खत्म, ठीक है? और कौन है? रिफत, आपने मुझसे दरमियान में क्वेश्चन पूछना है अगर मतलब है आपको कोई बात क्लियर ना हो, ठीक है? पूरे उसका इंतजार ना करें, दरमियान में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस है और उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू मैंने मालूम करनी, दिस इज R1, ठीक है? अब ये रेजिस्टेंस वैल्यू मैंने मालूम करनी है, ठीक है? ये वो फर्नेस की एग्जांपल है, ठीक है? इनिशियली R1 की वैल्यू 100 ओम है, ठीक है? व्हेन द रूम टेम्परेचर, व्हेन इट इज एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री। अब हमने ये R1 तीन इक्वेशन से मेजर करना है, ये दो मेथड से। मेथड कौन से हैं? मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। मेथड 1 जो है नल मोड है, null mode of measurement, ठीक है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हम अपना व्हीटस्टोन ब्रिज लेंगे, ठीक है? और व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, चलो मैंने बहुत नजदीक बना दी, यहां पे मैं बना देता। ठीक है, अब R1 को मैं रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है? और ये मेरे पास फर्नेस है। Initially, when the furnace temperature is 25 degrees C, then all the resistances are 100 ohm. ठीक है?
सिंस ऑल द रेजिस्टेंस, और हमारे पास ब्रिज बैलेंस का फार्मूला क्या है, R1 या R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू R4/R। R3। ठीक है, अगर मैं इसमें R1 R2 R3 और R4 की वैल्यू डाल दूं तो मेरे पास वैल्यू आएगा 1 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, देयरफॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस एंड गैल्वानोमीटर की नीडल पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं। लेट्स सपोज फ्रॉम 100 डिग्री सी टू 25 डिग्री सी, मैं इसको 100 डिग्री सी कर लेता हूं। टेम्परेचर, फर्नेस का टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया। अब ये रेजिस्टेंस जो है इट हैज चेंज्ड, लेकिन वो वैल्यू अभी मुझे नहीं पता कि वो वैल्यू क्या है। ठीक है, सो एज द रेजिस्टेंस वैल्यू चेंजेस, गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 से हट जाएगी। ठीक है, वो एक साइड पे डिफ्लेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब हम इज्यूम करते हैं कि हमारे पास R2 जो है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब R2 को मैं चेंज करना शुरू कर देता हूं। ठीक है, एज आई चेंजेस R2, ठीक है, जब मैं 101 कर लेता हूं तो ये नीडल जो है वो यहां पे आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि आई वांट द नीडल टू गो टुवर्ड्स 0 डायरेक्शन। अगर 101 पे नीडल इस साइड पे आ जाती तो फिर मैं और रेजिस्टेंस बढ़ाने के बजाय कम करना शुरू कर देता। लेकिन चूंकि नीडल बाय इंक्रीजिंग R2 वैल्यू, द नीडल इज मूविंग टुवर्ड्स द 0 कंडीशन, देयरफॉर आई विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। लेट्स सपोज 102 पे नीडल जो है वो यहां से यहां पे आ गई। ठीक है, when I make it 102.5 then the needle is exactly at 0। ठीक है, अब मैं अपने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे मालूम करूंगा। अब अगर आप देखें इस वक्त गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो किस पॉइंट पे, 0 पे है या नहीं है स्टूडेंट रिफत? यस, 0 पे। यस सर। ठीक है, चूंकि 0 पे है तो इसका मतलब है कि ब्रिज बैलेंस्ड है ना, देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द मीटर। जब ब्रिज बैलेंस होगा तो इसका मतलब है कि ये वाली इक्वेशन वैलिड है। ठीक है, if this equation is Yes. valid, if this equation is valid and only unknown is R1, we know R2 value which is equal to 102.5, we know R4 value which is equal to 100 ohm, we know R3 value which is equal to 100 ohm, then that means we can find R1 value, and R1 value comes out to be 102.5. 102.5। हाँ, 102.5। दैट्स इट, हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। ठीक है, हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ठीक है सर, हम नल मोड यूज नहीं करते क्योंकि फॉर एग्जांपल हो सकता है एक रीजन ये हो, आप द रीजन, वन ऑफ द रीजन माइट बी कि आपके पास कोई कैलिब्रेटेड वेरिएबल रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। यू डू नॉट हैव ए कैलिब्रेटेड वेरिएबल रेजिस्टेंस कि जिसको वेरी करके आप ब्रिज को दोबारा बैलेंस कर सकें। ठीक है, सो यू डू नॉट हैव ए पोटेंशियोमीटर, ए कैलिब्रेटेड पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इसलिए आप मजबूर हैं कि आप नल मोड ऑफ मेजरमेंट यूज ना करें, नहीं कर सकते। रादर आपने मेथड 2 यूज करेंगे विच इज अ डिफ्लेक्शन मोड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अब जब आप डिफ्लेक्शन मोड ऑफ मेजरमेंट यूज करेंगे तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। चॉइस नंबर ए, यूज सिंपल फार्मूला, but your result will have some error, and the magnitude of this error depends on whether your meter resistance is close to infinity or, relatively speaking, further away from infinity. This is your option number 1. Option number 2 is to use complex
और कॉम्प्लेक्स कहें, क्या कहें, वो जो बड़ा फार्मूला है? यस सर, कॉम्प्लेक्स के चले, यूज द वी, Precise. ठीक है, प्रिसाइज, प्रिसाइज बट complex formula, ठीक है, in which case your result will theoretically be 100% accurate, ठीक है। theoretically मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कभी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, देयर आर सो मेनी अदर सोर्सेस ऑफ एरर, ठीक है, लेकिन आपकी जो इंस्ट्रूमेंट का लोडिंग एरर होगा वो निग्लिजिबल होगा या जीरो होगा, ठीक है, यानी इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर नहीं आएगा, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की वजह से। अब आपकी चॉइस है। रिफत, आप बताएं आप कौन से फार्मूला यूज करना चाहते हैं? कॉम्प्लेक्स फार्मूला यूज करना चाहते हैं या सिंपल फार्मूला यूज करना चाहते हैं? स्टूडेंट? सिंपल सर। सिंपल, ठीक है। सो यानी हम ए, तो हमारे पास फार्मूला क्या है कि आउटपुट डेल्टा आउटपुट चेंज इन आउटपुट वोल्टेज assuming that initially the bridge is balanced is equal to input voltage, let's suppose this is 15 volt, into delta into chale R1 divided by R1 plus R2 minus R3 divided by R3 plus R4, ठीक है। So initially, now we do the experiment again. Initially R1 is equal to 100 ohm, R2 is equal to 100 ohm, R3 is equal to 100 ohm, R4 is equal to 100 ohm. So initially, bridge is balanced. So initially, let's suppose we use a voltmeter. Even if it's a galvanometer, we can convert the galvanometer current into voltage drop by multiplying galvanometer current with the meter resistance, ठीक है। So let's use either a voltmeter or a galvanometer whose current is multiplied by resistance. So our output will be a voltage. So let's suppose this instrument gives us voltage, either directly because it's a voltmeter, or through calculation, if it is a galvanometer, and we just simply multiply the galvanometer current value with the meter resistance to get the voltage drop across the galvanometer. So what we do is initially the output voltage will be zero, okay, and then we start heating up the furnace. As the furnace temperature increases, let's suppose the furnace temperature changes from 25 degrees C to 100 degrees C, and the resistance value, R1 value, resistance value have also changed. We do not know what that resistance value is, and we want to find out what that value is. So let's suppose this comes out to be the voltage difference. I read the voltage difference, and let's suppose it comes out to be 1 volt. So the voltage drop across the voltmeter, the needle deflects to a voltage value of 1 volt. That means that the voltage drop between point B and C is 1 volt. So all I have to do, I'll have to put these values. This is 1 volt. This is 15 volt. R1 value we do not know. R2 value, since it's a constant value, it doesn't changes. It is 100. R3 value is 100. R3 value is 100. R4 value is 100. So we have a simple equation with a single unknown R1 when we solve for R1 value. So let's suppose R1 value, I'm not going to do any calculation, but let's suppose after calculation, I get the value of 102.7 ohm. ठीक है। नल मोड से जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी 102.7
5। और जो हमने वही वाला एक्सपेरिमेंट जब रिपीट किया डिफ्लेक्शन मोड से, when we assume that the meter resistance is infinity, but in reality the meter resistance or the meter resistance approaches to infinity, that was our assumption, but in reality the meter resistance was not very high, so it was actually a finite value for a meter resistance. Therefore our calculation have some error compared to null mode of measurement. Okay? And why is this error? Let's suppose I replace this meter. For example, let's suppose this meter, our first RM value is 1 mega ohm. Then I replace this same meter with a 1 giga ohm and repeat the same experiment. This time my value will be 102.6 ohm. Why is that? Why is my value more accurate? The reason is that the meter resistance is relatively more closer to infinity compared to the previous meter value of 1 mega ohm. ठीक है? If it's a voltmeter. यहां तक समझ आ रही है इस बात की स्टूडेंट? Yes, sir. ठीक है? अच्छा, okay. शायद रिफत कहें कि सर let's see what if we use the complex formula. ठीक है? What if we use the complex formula rather than the simple formula? So we take into account the actual meter resistance rather than assuming that the meter resistance approaches to infinity and then using a meter whose value is not very close to infinity. So let's suppose if I do the same experiment in deflection mode using a meter whose resistance value is a finite 1 mega ohm resistance. Okay? And if I use that complex formula, that lengthy formula to do my calculation, maybe my result is even for a meter resistance that doesn't approaches to infinity, or it is further away from infinity, even for that meter, if I use the complex formula, my result will be more accurate. Rifat, clear hai? Yes, sir. Yes. ठीक है? Now I'm going to do a few examples quickly. ठीक है? So and we kind of have done, अभी जो मैंने आपके सामने example problem किए हैं, ठीक है, hypothetical problem, ये example भी उसी तरह का है. For example, a certain example 6.3, a certain temperature sensor experience a change in electrical resistance when temperature according to this relationship. So ये RTD की equation है. So the RTD resistance value changes with temperature that the RTD experiences as per this equation, ठीक है, where R is the sensor resistance or RTD sensor resistance, R naught is the sensor resistance at reference temperature T naught, typically room temperature, or it might be some other temperature noted on the data sheet of the instrument. T is temperature which is unknown that we want to measure within RTD, and T naught is a reference temperature, a calibration temperature which corresponds to R naught, and T corresponds to R, and alpha is a constant. ठीक है? It's the material constant, it is the instrument constant. ठीक है? This temperature sensor is connected to a V-stone bridge like the one shown in figure. ठीक है? So R1 here is RTD. ठीक है? In the figure where sensor occupies R1 location and R2 is a calibrated variable resistance. अभी जो थोड़ी देर पहले जो मैंने example किया. The bridge is operated using a null mode of measurement. The fixed resistance R3 and R4 are each equal to 500 ohm. This is not voltage. If the temperature sensor has a resistance of 100 ohm, at 0 degrees C, so our R naught is
T naught is 0 degree C, and R naught is 100 ohm. ठीक है? अच्छा, wait. यहाँ तक students? Students. जी सर। Yes, जी sir. यहाँ ये रहे यहाँ तक any confusion? नो सर। ठीक है. So एक मिनट में लैपटॉप चार्ज में just give me one moment please. Okay, so determine the value of R2 that would balance the bridge at 0 degree C. Okay, so what should be the value if R, okay, if R1 is equal to 100 ohm, very simple, R2 is equal to 100, R3 is equal to 100 ohm, R4 is equal to 100 ohm. What should be R2 value to make this bridge circuit a balanced bridge circuit? Students? वो भी 100 होना चाहिए। वो भी 100 होनी चाहिए. That's the answer, one line answer. Next, ठीक है. Next, consider a deflection bridge which, अच्छा ये वाला प्रॉब्लम फिर जरा बुक में देख लें डिटेल में. ठीक है, आगे उसी तरह से वो अननोन टेम्परेचर करते हैं. So the value of R1 changes, which is unknown, but to get the needle back to 0 value, you change the R2 value to a certain new value, and that is given in the example in the book, and then you solve for unknown value of R1, जैसे अभी पिछले example में हमने किया था. So example 6.4, consider a deflection bridge which is initially all 4 arms of the bridge equal to 100 ohm. If initially all 4 resistances are equal, that means that initially the bridge is balanced, and initially the bridge output is equal to 0 volt. With the temperature sensor described in example 6.3 as R1, again R1 is your RTD temperature sensor. The input or supply voltage to the bridge is 10 volt. If the temperature of R1 is changed such that the bridge output is the output is 0. So we have deflection mode. Output voltage is 0.569 volt. What is the temperature of the sensor? How much current flow through the sensor? And how much power must is dissipate? Student, कौन करेगा? Who want to solve this problem? कोई है? Volunteer. Students, anyone? नहीं है तो कोई जवाब दे दे कि कोई नहीं है. सर बैलेंस इक्वेशन यूज करेंगे सर. बैलेंस साइड जो वी ट्यून ब्रेक में हम यूज करते हैं. कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? सेकंड वन सर. सेकंड कौन सी? सर वो सिंपल यूज करेंगे जो आपने R1 की वैल्यू चेंज करते हैं सर. वो आप अच्छा, सबसे पहले बिल्कुल ठीक है. सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या? मैं 3 इक्वेशंस लिखता हूं ना. एक हमारे पास ये है R2 divided by R1 equal to R4 divided by R3. फिर जो है हमारे पास जो है delta E out is equal to EI into R1 divided by R1 plus R2 minus R3 divided by R3 plus R4. ठीक है.
और एक हमारे पास वो लेंथी फार्मूला है, डेल्टा ई नॉट इज इक्वल टू दिस 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 दिस, वो एक लेंथी फार्मूला है जो कि मुझे ज़बानी याद नहीं है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन सबसे पहले आपसे ये है कि हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट? सर ये दूसरा वाला, सेकंड अच्छा, वाला। क्वेश्चन में कहा गया है कि डिफ्लेक्शन मोड यूज करें ना। अब डिफ्लेक्शन मोड में दो फार्मूले हैं आपके पास, आप क्यों सेकंड वाला यूज कर रहे हैं, थर्ड वाला क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? वो लेंथी है सर, अभी आप अगर लेते तो फिर वो हम यूज करते, वो इजी है, मतलब सर उससे एक्यूरेट आंसर आते हैं, एरर का चांस कम होता है, इसमें एरर ज्यादा होता है, लेकिन ये सिंपल है। ये सिंपल है, लेकिन एक बात जरा क्वेश्चन को, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू अटेम्प्टिंग द प्रॉब्लम। अगर आप क्वेश्चन में देखें, इसमें आर एम मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है सर, इनफाइनाइट है सर, इसलिए सर सेकंड वाला यूज करेंगे। हाँ, क्योंकि गिवन नहीं है तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको फाइनाइट वैल्यू एज्यूम करते हैं मीटर रेजिस्टेंस की, तो आपने मजबूरन फार्मूला नंबर 3 यूज करना होगा, तो आप अपनी लाइफ मुश्किल बना रहे हैं। लेकिन चूंकि आपके पास चॉइस है, you can make an assumption, you will have to make an assumption for the meter resistance. You can either assume it to be Rm approaches to infinity, or you can assume it to be Rm equal to some finite value. दो choices हैं. If you make the choice that Rm approaches to infinity, as per the question, आप पे पाबंदी नहीं है कि आप infinity लें या finite लें, लेकिन you have made your life easy. If you choose Rm approaches to some finite value, so you will have to assume some finite value, maybe 1 mega ohm, 500 kilo ohm, 1 kilo ohm, whatever, some value for the resistor, for the meter resistance, plus you will have to solve this problem with the lengthy formula. Okay? So yes, the good choice is to use an assumption that Rm approaches to infinity and then use equation number 2. For this case, we know that the delta output voltage is 0.569, okay? And input voltage is 10 volt, and R2, R3, and R4, which are all fixed resistances, and they are all 100 ohm. 100 ohm and 100 ohm. Now, the only unknown in this equations are R1. So you just solve it for R1 and you get the value of R1. So that is our first problem. Okay? What is the temperature of the sensor? So once we know the value of R1, okay, then we can use that R1 value into the RTD formula, where R1 is equal to, where was that formula? So R1 is equal to R naught into 1 minus alpha T minus T naught. Okay? Where in the previous example, T naught was 0 degree C, and R naught was, I believe, 100 ohm at 0 degree C. Alpha value was given, and R1 value we have found out through this equation. Okay? The only unknown is the temperature T. Clear है यहाँ तक student? जी सर। ठीक है. Next, now the other few parts of this problem are interesting. How much current flows through this sensor? So how much sensor means R1. So how much current is flowing through R1? To answer this question, we need to know the value. We need to know the value I1. ठीक है? और I1 की value, since we assume that Rm approaches to infinity, so our circuit is very simple. Value, since we assume Rm approaches infinity, our circuit is R1, R2, R3, R4. So we need to find value of I1. और ये आप लोगों ने खुद कर लेना है, ठीक है? It's very easy. इस सर्किट में कुछ भी नहीं है, because the total current I splits into two currents, I1 and I3, ठीक है? And you need to find the value of I1. Once you know the value of I1, that is answer to the question, how much current flows through the
sensor. So the current flow through the sensor is equal to I1 some value. And how much, next question is, how much power is dissipated through this sensor? ठीक है, यानी R1 के क्रॉस कितनी पावर डिसिपेट हो रही है? We know that to be power P is equal to I1 square R1. R1. Okay? This is the power dissipated through resistance 1. 3-part question. Okay? Any question? Should I move forward? Yes, sir. सर नमाज Okay. कीजिए 10 मिनट दे दे, नमाज कज़ा हो जाएगी। ये 10 मिनट और इंतजार कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। अच्छा अच्छा, 10 मिनट इंतजार कर लें, फिर मैं लेक्चर क्लोज, और अगर कहते हैं तो मैं ब्रेक दे देता हूँ फिर, क्योंकि हमारी मैक्सिमम 20 मिनट रहते हैं लेक्चर में। So 5 मिनट का ब्रेक। अच्छा चलिए 5 मिनट ले लें, फिर आ जाए। कर ले। बस खैर खैर जल्दी से आ जाए, 5 मिनट में आ जाए। खैर, थैंक यू।
students? जी सर. Student, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, टाइम हमारे पास कम है. So our next example is example 6.4. Consider a deflection bridge which initially has all the four arms of the bridge equal to 100 ohm with temperature sensor described in example 6.3 again as R1. The input or supply voltage to the bridge is 10 volt. If the temperature resistance of R1 is changed such that the bridge output is 0.56 volt, what is the temperature sensor? How much current flow sensor through and how much power mass is dissipated? अच्छा ये तो अभी हमने कर लिया, ठीक है. We go to example 6.5 loading error, ठीक है. So for the V-Stone bridge shown in figure 6.18, these are your example from your textbook, ठीक है. Find the open circuit output voltage when Rm approaches to infinity if the four resistances changes by this value, ठीक है. Now अब तक हम जितने प्रॉब्लम कर रहे थे उन सब में सिर्फ एक रेजिस्टेंस चेंज हो रहा था. Only R1 was changing. In this case, all of the four resistances are changing. So all of the four resistance initial value is 5,000. R1 is equal to 5,000, R2 is equal to 5,000, R3 is equal to 8,000, R4 is equal to 8,000. For these values of resistances, the bridge is initially balanced and it's a full bridge circuit. That means that all the four resistance values changes and the first resistance R1 value changes by 40 ohms. So the final value of R1 resistance will be 5,040 ohm. This R2 value, R2 resistance value changes by minus 40 ohms. So the final value of R2 resistance will be 4,960 ohm. Similarly, R3 by plus 40 ohm and R4 by minus 40 ohm. And our assumption, they have given us the assumption, this time they have made the assumption for us that Rm approaches to infinity. Okay. That means that we will use the second formula where delta E naught is equal to input voltage. Delta output, change in output voltage for the bridge circuit is equal to input voltage to the bridge circuit into R1 divided by R1 plus R2 minus R3 divided by R3 plus R4. So we will use that formula, okay, and we will find out the value, okay. Now, why are they saying open circuit output? Student, कोई मुझे बता सकते हैं? Student. For Rm infinity is infinite resistor meter. Yes, very good. Since Rm is infinite, therefore we assume that there is no path between point B and C, and that's why we are measuring the voltage between point B and C without any current flow path. And we assume it to be an open circuit because we assume that Rm approaches to infinity. Okay? Now consider the case where a meter with internal resistance of Rm is the same problem as this one. ठीक है, वही problem, but this time rather than assuming that Rm approaches to infinity, we assume that Rm approaches to Rm is equal to 200 kilo ohm. So of course it doesn't approaches to infinity, it is some finite value, 200 kilo ohm. ठीक है, what is the output voltage with this particular meter in the circuit? Estimate the loading error. ठीक है, so if we use this value, then the output value comes out to be output value comes out to be 0.0726 volt. Okay, and in the previous case 0.0750. So when we assume that the meter resistance is 0.0750, ठीक है,
So if we assume it to be 0.0750, this is when we assume that there is no value, no current flow through the meter. ठीक है, तो हमारे पास ये value आ रही है. When there is some current flow through the meter, we have this value. Now this is if we have an ideal meter. If we have an ideal meter, we will get these values. We have an ideal meter with zero loading. Okay? And this is the value for a real meter with some instrument loading error. ठीक है? And simply आगे उन्होंने सिर्फ percentages निकालें to find out the percentage difference between the two answer, and that percentage difference is also the loading error of the instrument. ठीक है यहाँ तक students? Yes sir. ठीक है? Actually जो आपके पास formula number 2 से जो result आ रहा है ना, ठीक है, that is for a ideal condition when there is no effect of the instrument on the measurement process. ठीक है? But in reality, whenever you try to measure something with a contact instrument, ठीक है, then it will have some effect on the measurement process, and that unwanted effect is called the loading error of the instrument. And here we have quantified that loading error as 3.15%. ठीक है? Yes sir, clear. अच्छा, अब जल्दी से यही लोडिंग एरर एक दफा दोबारा पोटेंशियोमीटर, चलिए ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. अभी टाइम पूरा, मैं आप लोग की अटेंडेंस ले लेता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाएं. हम ये लोडिंग. ओके सर. Okay. मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? जी सर. Let me take your attendance.